शो। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 जी। जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम अस्सलाम यार। तारिक भाई, छोटा सा सवाल है। मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ। मेरी वाइफ अभी स्पाउस वीजे पे आई है यहाँ पर। हम्म तो अब असल में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है बाहर की, दुबई में। तो उस सिलसिले में मुझे कहना था कि अगर मैं वहाँ पर स्विच करता हूँ तो मेरी वाइफ का स्पाउस वीजे का क्या होगा? वो एक्सटेंसिबल होगा आफ्टर 2.5 ईयर में, या फिर वो जैसे इनका तो 90 डेज 1 ईयर तक होता है ना? तो अगर मैं इसको ब्रीच करता हूँ तो किस तरह मैं अपनी वाइफ को वहाँ पर लेकर जा सकता हूँ? कुछ बड़ी पॉसिबिलिटी है? ओके, सॉरी, कोई और भी सवाल है आपका? जी नहीं, मैं यही सवाल है। अगर ऐसा है तो फिर क्या प्रोसेस होगा? इनको होम ऑफिस को बताना पड़ेगा जाने से पहले, ऑलराइट और 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होगा वहाँ पर। ऑलराइट, मैं अर्ज़ कर देता हूँ यार। देखें, पहली बात तो ये कि अगर आप मिडल ईस्ट जाते हैं, मतलब यूके से बाहर जाते हैं और आपने अपना घर यूके से बाहर बना लिया, यू टेक योर वाइफ विद यू, तो फिर कोई वैल्यू नहीं है स्पाउस वीज़े की, बिकॉज अगर आप 6 महीने से ज़्यादा बाहर रहेंगे प्रॉब्लम आती है वीज़े में। तो मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि आप होम ऑफिस को बता दें कि ये अब जा रही हैं मेरे साथ, वो आप उनको ऑनलाइन इन्फॉर्म कर सकते हैं, और जब भी आना हो विज़िट वीज़ा लेके आ जाएं वापस यूके, नॉट अ प्रॉब्लम। और जब फ्यूचर में आपका प्लान हो कि मैं वापस यूके में आना चाहता हूँ, तो उस वक्त फिर आप दोबारा जो भी उस वक्त के कानून हैं स्पाउस वीज़ा अप्लाई करके वापस आ जाएं। आई थिंक वो बेहतर है आपके लिए रास्ता, देन कि आप ओवर कॉम्प्लिकेट करें चीज़ों को और उनको हर 6 महीने के अंदर वापस लेके आएँ। बिकॉज फिर भी जब उनके 5 साल पूरे होंगे और वो पीरियड क्वालिफाइंग देखेंगे और कहेंगे इतने ज़्यादा उनके ट्रिप्स थे आने जाने के, सवाल उठेंगे, बिकॉज कंटिन्यूस रेजिडेंस पीरियड 180 डे बीच में आ जाएगा, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होंगी। और मेरे ख्याल से बेहतर है कि अगर आपका घर बाहर हो गया है कुछ अरसे के लिए, बिकॉज आपकी रेजिडेंस वहाँ हो गई है, अपनी वाइफ को साथ लेके जाओ, होम ऑफिस को बता दें आप ब्रिटिश सिटीज़न है, आपकी अच्छी पे होगी मिडल ईस्ट में, व्हेन यू कम बैक स्पाउस वीज़े पे वापस उनको ले आएँ। और वैसे भी क्योंकि आप ब्रिटिश सिटीज़न है, आपका बच्चा कहीं भी दुनिया में पैदा हो, द चाइल्ड वुड बी ब्रिटिश सिटीज़न। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा आपसे दो सवाल हैं। कि एक तो सवाल ये है कि मैं 2016 में यहाँ पर आया था, और मेरा अब नवंबर 2018 के एक्सटेंशन करवाना है वीज़ा। तो उसके लिए मुझे कोई इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा पहले? एक सवाल ये है। और दूसरा ये है कि एक्सटेंशन के मुझे कितना अर्सा पहले अप्लाई करना पड़ेगा? और आप स्पाउस वीज़े पे आए थे आई अज्यूम? जी हाँ, मेरा पास वीज़ा। बड़ी मेहरबानी यार। देखें, पहली बात है कि जो इंग्लिश टेस्ट है वो उन्होंने नई लिस्ट अप कर दी है, जो कि मेनली ट्रिनिटी कॉलेज एंड आइल्स है, और वैसे भी जो आपके पुराने टेस्ट हैं वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड रहते हैं। तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि आपको टेस्ट दोबारा देना पड़ेगा, लेकिन वो आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे जाके वो चेक कर लें अपना टेस्ट। तो ये तो एक चीज़ हो गई। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज़ है जिसमें आपने बोला है कि कितना अर्सा पहले मैं अप्लाई कर सकता हूँ, वैसे तो एक्सटेंशन के बाद कोई ममानत नहीं होती, लेकिन 28 डेज़ अ पीरियड जो वो देखते हैं, और क्योंकि आपको वैसे भी पूरे 5 साल करने होते हैं, बहुत पहले अप्लाई करेंगे तो अगर 5 साल आपके पूरे ना हुए, एक दो हैं मेरे लोगों ने मुझसे कभी पूछा है कि जी भी 5 साल होने में 2 महीने रहते हैं और हमारा वीज़ा ख़त्म हो गया स्पाउस, बिकॉज हमने लास्ट टाइम एक्सटेंशन ज़रा जल्दी करवा ली थी। तो जस्ट लीड इट अप टू 28 डेज़ रफली, और फिर अप्लाई कर लें, यानी कि 28 डेज़ बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ योर वीज़ा, और आप फिर अप्लाई कर लें ताकि आपके आराम से 5 साल पूरे हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से, थैंक यू सो मच यार। मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं 10 ईयर्स की रूट पे मुझे 2.5 ईयर्स का वीज़ा मिला है, नो पब्लिक फंड्स पे। मेरे 2 चाइल्ड्स हैं और मेरी वाइफ के पास इंडेफिनिट लीव है। ओके, तो क्या मेरी वाइफ कौंसल हाउस के लिए अप्लाई कर सकती है? ऑलराइट, थैंक यू सो मच मेरे भाई। ताकि आप मेरे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी मेरे एक्सटेंशन में? ऑलराइट, मैं अर्ज़ कर देता हूँ यार। थैंक यू। थैंक यू सो मच यार। ये लोग मुझे बहुत पूछते हैं कि जी हमें नो रिकोर्स टू पब्लिक फंड है, और अगर हमारी स्पाउस अप्लाई करती हैं तो हमें इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो लेट मी एक्सप्लेन कि इस वक्त होम ऑफिस कर क्या रहा है। जितनी एक्सटेंशंस आ रही हैं 2.5 साल की, अगर कोई बंदा अप्लाई कर भी रहा है बेनिफिट, तो होम ऑफिस अभी इशू रेज नहीं कर रहे और वो उनको एक्सटेंशंस दे रहे हैं। जब सेटलमेंट की बारी आ रही है, होम ऑफिस कोई इशू रेज नहीं कर रहे, उनको सेटलमेंट भी दे रहे हैं, ये इस वक्त चल रहा है, इंटरनल उनकी पॉलिसी चल रही है। जब नेशनैलिटी की बारी आती है, जिसको हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं, तो मैंने कुछ डिसीजंस देखे जिसमें होम ऑफिस ने कहा है कि जी आपने रिकोर्स टू पब्लिक फंड लिया था, आपके स्पाउस थे, उसमें आप पार्टी थे, और क्योंकि रिकोर्स
टू पब्लिक फ़ंड में ये होता है कि अक्सर जो फ़ंड होते हैं वो कपल को ही मिलते हैं, बिकॉज उसमें दोनों का नाम जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप भी बीच में हैं। तो वो कहते हैं जी हम आपको नेशनैलिटी नहीं देंगे जब तक 10 साल नहीं गुजर जाते जब आपने लास्ट टाइम फ़ंड लिया था। तो कहने का मतलब है कि ये इस वक्त होम ऑफिस की इंटरनल पॉलिसी चल रही है, बिकॉज अगर आप नो रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड क्या पॉलिसी देखें जो होम ऑफिस ने डिस्क्राइब की है अपने पेज के ऊपर, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन नटशेल उसका ये है कि जी अगर आपका स्पाउस जो एलिजिबल भी है अप्लाई करने के लिए बेनिफिट्स, जब वो जाके रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड मांगते हैं तो ऑटोमेटिकली यू आर पार्टी टू इट, बिकॉज वो जॉइंट बेसिस के ऊपर देते हैं, तो आप भी रिकोर्स टू पब्लिक फ़ंड के अंदर फिर दायरे में आ जाते हैं। लेकिन इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है कि एक्सटेंशंस दे रहे हैं, सेटलमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो लोग नेशनलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं और जिन्होंने पहले फ़ंड्स लिए थे उनको ये बोल रहे हैं कि जी 10 साल आप एक्सपायर होने दें फिर हम आपको पासपोर्ट देंगे। बट फ़नी इनफ ये हर केस के साथ नहीं कर रहे। आई थिंक द इन्वेस्टिगेटिंग 6 to 7 केसेस आउट ऑफ 10। तो ये एक इंटरनल पॉलिसी इस वक्त चल रही है। बट येस, अगर आप रिकोर्स लेते हैं पब्लिक फ़ंड की तो इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, नेशनैलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, एक्सटेंशन में तो वो देंगे ही देंगे, सेटलमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो इस वक्त कर नहीं रहे होम ऑफिस। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अगले कॉलर की तरफ जाते हैं। हेलो। Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। I have two questions and I will speak in English because I am not fluent in Urdu. Okay. All right. My question is, we just applied for Tier 1 entrepreneurs, £200,000 last December, end of December, Okay. 2017. But main problem is my solicitor first said that we don't need any maintenance fund. As you know, it is point based. Yeah. Yeah. So my solicitor first told me that you don't need any maintenance fund. That's why my maintenance fund was not ready when we applied for extension. Okay. But my entrepreneur team partner, he got the maintenance fund, everything. And then my solicitor advised me that my entrepreneur team member, he applied Tier 1 extension, and my solicitor put me, the FLR HRO. As my maintenance was not ready, and he told me it will be refused straight away. Yeah. So you will not gain any point. So Okay. he said that if we put your application FLR HRO, then we will get some time, at least 90 days, to mature my maintenance fund. Mm-hmm. Okay. So in the meantime, we discussed with another solicitor, and they said that if my entrepreneur team member he do the biometric everything, and his file will be on the caseworker to normal procedure, and it will be straight away refused due to I am in FLR HRO. Yeah. So what can we do at this moment? So if we go normal way, or wait for, or any other way to get my 90 days, what your advice at this? All right. Thank you so much. Is there any other question you have? No, it's okay. All right, thank you so much. Let me tell you the easy part of the equation. It's an entrepreneurial team, meaning you are a team member, your partner is a team member. The money was invested into the business jointly. So one of the conditions that you've invested 200,000 into the business means the applicant has invested 200,000 into the business. If you're a partner, meaning 100 each, because you're partners. So even if one of the partner fulfills all the mandatory requirements, they will not grant him the visa, because the investment, he only controls £100,000 of the investment, because you are the joint partner. So he does not own everything in the business. You own half the business unless you give away your rights to him. So the lawyer who explained to you that if you submit an HRR application, at the same time your team member makes an application for the normal extension, there is a high probability he'll be refused on the basis that the investment, the 200,000 he hasn't put in it, there's another partner in it, unless you forego your side of the money. Now, I do not know how complicated your case is and why it took you so long to realize that there had to be a maintenance, and how much time has passed since you maintained the maintenance. Because one other thing is that when you make the application, first time proper application, you can explain to them that, look, I haven't made my maintenance, there was an oversight on my part, could you hold on to my application? I'll submit another application after 90 days if you hold on to my application.
it's the discretion of the Home Office. They can hold on to your application for 90 days if they want to, and then you can do a variation application with new documentation, meaning a fresh application, and submit to them. Or they can give you a decision, and of course there would be administrative review within the decision. You can challenge on the administrative review and all that time is extended, and if by luck all this process is taken up to 90 days or all this process is taken up to the time you require to maintain your maintenance, you can make a fresh application as long as the gap between the expiration of the administrative review and the new application is not more than 14 days. So there are a few options you can take, but it is all dependent upon when did you make, how much time has lapsed since you started maintaining your funds, because could be 90 days from now when we are talking to each other, or maybe it's only 10-15 days left. So I think what I would not advise, because I cannot give advice on this show, the information I think I would give you is go to somebody who's very competent in these sort of applications. And because you have not made it very complicated, your issue, but you have made it slightly difficult for yourself to get back on track. So you need somebody who's competent enough to understand the timelines and understand how much time the administrative review would take, and maybe accordingly, after looking at the timeline you're looking at, how long you require to have the funds ready, advise you, and then perhaps, if possible, and you're within that 14-day window once everything finishes, you can make another application for the extension, and at that application everything would be ready for you. So I've tried to make it very simple. I don't know if you've understood it, but I think it's very important you go to somebody who's competent in these applications, and they would advise you how to proceed with this. Giving you advice, doing HRO application, I'm just not a big fan of randomly throwing applications at the Home Office. I think you should be truthful for the Home Office. You should be honest to the Home Office. At the end of the day, you've just invested 200,000 in this country, and I'm pretty sure you would have the money somewhere if somebody had informed you in time that you had to make the maintenance funds for 90 days. And I think you should explain all that to the Home Office and say, look, just hold on to the application for 90 days and I can go back and resubmit a new application. If they don't use their discretion, it's up to the Home Office. But at least you would be honest with them. Making HRO application and all this, like I said, I'm not a big fan of going zigzagging to the Home Office. I'm a very straight shooter, and I think you should just straight away say to the Home Office what the situation is. If they're willing to give you the time with the application, fine. Otherwise, you do the administrative review, because all that period is legal. Then you have another 14 days at the expiration of the administrative review. And if all that period is sufficient for you to cover your 90 days, you can make another fresh application. But again, these are all hypothetical solutions. You'll need to go to somebody who has knowledge of these things. And of course, I've not read your papers. I think that's what you need to do. Thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ जाते हैं. Yes. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं रेहाना बात कर रही हूँ. प्लीज मुझे नेचुरलाइजेशन के लिए पूछना है. मुझे 7 साल हो गए इंडेफिनिट लीव हुए. जी जी. उसकी फीस वगैरह के बारे में प्लीज आप बता दें. और मैं दूसरे टाउन से लास्ट ईयर मूव हुई हूँ इस टाउन में. तो कहते हैं कि 3 साल से रेफरेंस जो देने वाला हो वो आपको 3 साल से जानता हो. तो मैं वरीड हूँ कि मुझे यहाँ इस टाउन में तो कोई 3 साल से जानता नहीं है. और उसके लिए प्लीज़ आप ये भी बता दें कि रेफरेंस कौन कौन से बंदों का ज़्यादा ज़रूरी होता है नेचुरलाइजेशन के लिए. ऑलराइट, थैंक यू सो मच जी. मुझे अभी बताया जाता है मेरे कान में कि ब्रेक का टाइम है. मैं बिल्कुल आपका सवाल सुन लिया था. मैं ब्रेक के बाद आपको पहले जवाब दूंगा बिफोर टेकिंग अदर फ़ोन कॉल्स. अब आपके पास एक ईमेल भी आ रहा होगा एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. अगर किसी वजह से मैं शो के अंदर आपकी कॉल नहीं ले सकता या आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, तो आप इस ईमेल के ऊपर अपना नाम और टेलीफोन नंबर मुझे भेज दीजिए. आई विल ट्राई माय बेस्ट टू गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. अब हम ब्रेक पे चलते हैं. आई विल टेक सम मोर कॉल्स आफ्टर द ब्रेक. थैंक यू.